अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ईरानी मंदूब ने कहा है कि इसराइली वफ़द के इजलास में शिरकत पर एतराज़ है। अपने खिताब में ईरानी मंदूब ने कहा कि ईरान ने गैर कानूनी जारहियत का सामना किया और इसराइल ने ईरान पर बिला इश्तियाल हमले किए। बताया कि ईरान सिफारतकारी और अमन का रास्ता चुनने के लिए पुरअज़्म है और पहले भी IAEA से ईरान ताउन कर रहा था। कहा कि ईरान ने कभी ये जंग शुरू नहीं की थी। My strong objection to the participation of the delegation of the Israeli regime in this meeting. Israel has no standing to take part in this meeting. This regime has no connection to the agenda of the meeting. However, with the full US support, Israel has targeted Iran's peaceful nuclear facilities, civilians and civilian infrastructure. It is disappointing that the Council failed to condemn these illegal attacks. Iran never initiated this war. Nevertheless, Iran will not overlook the deceit and double standards. Our brave armed forces remain fully prepared to respond to any further threats or violation. We are now closer to diplomacy than ever before. Iran emerged proud and steadfast in the face of this criminal aggression. This proves one simple truth more clearly than ever. Diplomacy and dialogue are the only path to resolving the unnecessary crisis over Iran's peaceful program.